Hello students, let's move on to the new sum today on partnership final accounts. The following is a trial balance of D and P as on, so these are the partners, that is Dipali and Piyusha on 31st March 2022. Okay, so trial balance will be having only one effect, drawings. This will be capital account debit, but now don't forget करंट अकाउंट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये जो मेरा ड्राइंग्स है वैसे तो ये जाना चाहिए कैपिटल डेबिट में, बट अभी ये जाएगा करंट अकाउंट के डेबिट में, ठीक है, बिकॉज करंट अकाउंट इज गिवन. Purchases, trading debit, returns. So this is which returns? This is sales return. So this will be less from sales. Okay. तो ये जो 4,000 है ये मेरा sales return है. Stock on 1st April. So definitely this is my opening stock, trading debit. Salary, P&L debit. Office expense, P&L debit. Bad debts, okay, P&L debit. Or you can use the formula as I said in the earlier lecture. Carriage inward, yes, this will be trading debit. Carriage outward will be P&L debit. Debtors, balance sheet asset. Bills receivable, balance sheet asset. Bank balance, balance sheet asset. Cash in hand, balance sheet asset. Investments, balance sheet asset. Buildings, balance sheet asset. Plant and machinery, balance sheet asset. Furniture, balance sheet asset. Wages, trading debit. Capital accounts, so you know you have to take it to the capital debit side. Yeah. If you're not making a capital account, directly take it in your balance sheet liability. Current account, so we are going to prepare, instead of putting entries in capital, we'll now put it under current account. Okay. So this is the opening balance of current account and this is the opening balance of capital account. Sales has to be trading credit. Now this returns is my purchase return. So this will be less from purchases. ये रहा, इसको बोलेंगे हम हमारा purchase return. Provision for bad debts, ये वो किधर गया, या ये आपका फॉर्मूले में आएगा, बैड डेट्स वाला फॉर्मूला जो हम 11th स्टैंडर्ड से यूज कर रहे हैं. 2 bad debts, add further bad debts, add new RDD less old RDD. So this is that old RDD. Okay, yeah. Bank loan, I'm just writing here F, that is formula. Bank loan, balance sheet liability creditors, balance sheet liability bills payable, balance sheet liability. Deepali's loan, this is partner's loan, balance sheet liability. Piyusha's loan, balance sheet liability. Okay. Now, just try and understand the adjustments. They all will be having two effects. Closing stock, trading credit. Second effect, balance sheet asset. Provision for bad debts is to be provided at 10% on debtors. So this is my new RDD. Okay. So debtors को tick mark कर दो because it is having an adjustment. ठीक है. तो ये तो मेरे फॉर्मूला में जाएगा और इसका सेकेंड इफेक्ट debtors से माइनस होगा. ठीक है. Next, depreciate building, plant and machinery and furniture. So tick mark all the three: building, plant and machinery and furniture. Okay. ये सबका depreciation जाएगा P&L debit में. Second effect, it will be subtracted from the respective assets. Okay. So I'll just show you the calculations here itself. Building का depreciation है 5%. तो 4,50,000 का 5% is 22,500. Okay. Then plant and machinery depreciation. Sorry, building ka depreciation is 5%. I'm so sorry. I just hit here. Yeah, it's here. 1,76,000 ka 5%. 1,76,000 ka 5% is 8,800. 8,800. And plant and machinery ka depreciation is 10%. So 4,50,000 ka, sorry, 4,50,000 ka 10%. That makes it to 45,000. Okay. और next क्या है, furniture का depreciation 20%. तो 42,000 का 20% makes it to 8,400. Okay, so this is my depreciation calculation. Next, credit purchase of rupees 5,000 has not been recorded. Okay, मतलब
अनरिकॉर्डेड परचेजेस. ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड मीन्स ये क्या है मेरा अनरिकॉर्डेड परचेजेस. सो अनरिकॉर्डेड परचेजेस का हाउ मेनी इफेक्ट्स? डेफिनेटली टू इफेक्ट्स. It will be added to purchases, and second effect, it will be added to my creditors. So put a tick mark to purchase as well as put a tick mark to creditors because they both are having adjustments. Okay. Next, provide for discount on debtors, which is famously known as RFDD, reserve for discount on debtors, and creditors, which is famously known as RFDC, reserve for discount on creditors. ठीक है, so ध्यान से सुनो. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसका टू इफेक्ट्स होगा, पीएनएल डेबिट एंड सेकेंड इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स. सिमिलरली रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, टू इफेक्ट्स, पीएनएल क्रेडिट and less from creditors. Okay, yeah, so we yeah, creditors and debtors हमने दोनों को टिक मार्क ऑलरेडी किया हुआ है because they already have an adjustment. ठीक है, okay. Next, 5% interest on partners capital, yeah, and loan पे भी interest is to be provided. So this will go in P&L appropriations. Okay, and second effect will be reflected in their respective current account. ठीक है. Next, each partner is to be paid a salary of 15,000 per annum. Okay, so P&L appropriation debit and second effect will be partners current account में जाएगा. Okay, credit side. Distribute profits in proportion of capital. That means your PSR should be based on capital ratio. So what is your capital? This is your capital. ठीक है, ये zeros हटा दो. ठीक है, so yeah, it will be 4 3s are 12 and 4 2s are 8. So 3:2 is my PSR ratio. Okay. अभी क्या है एक, हाँ, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस को भी टिक मार्क करो. या इसका टू इफेक्ट्स किधर किधर जाएगा, ये add to wages and second effect will be balance sheet liability. Okay, now let's see how it is to be calculated. Yeah, trading and P&L. ठीक है, opening stock one effect 40,000. Purchases, okay, 5 lakhs का there is a purchase. Okay, 5 lakhs का purchase less, sorry, add unrecorded purchases minus purchase return. So this is 4,99,000 is my net purchases. Okay, तो ये है मेरा एडजस्टमेंट. सो मैं इसका वन इफेक्ट दिखा रही हूँ, इसका सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर्स में ऐड होगा. ठीक है, कैरेज इनवर्ड का कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो ओनली वन इफेक्ट. वेजेस का था, वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो उसका सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा, आई मीन फर्स्ट इफेक्ट इधर आएगा. देन सेल्स दिया था 10,54,000 minus sales return of 4,000. So my net sales is 10,50,000. Closing stock का भी दो इफेक्ट आएगा, trading credit and second effect will be balance sheet asset side. So 10,50,000 plus 70 minus 40,000 minus 4,99,000 का net sales, sorry, net purchases minus 12,000 of carriage inward minus 1,31,000 of wages. So 4,38,000 is my gross profit. Okay. So this gross profit ka obviously second effect will be seen in P&L. Yeah. Office expense, trial balance, one effect. Salaries, trial balance, one effect. Carriage outward, trial balance, one effect. Bad debts का तो पूरा formula लिखना पड़ेगा. Yeah.
Two bad debts given in the trial balance 6,500. New bad debts is not there in the question, put a dash. Add NRDD. Okay, new reserve for doubtful debts, and less ORDD, old reserve for debts, doubtful debts. Okay, हाँ, इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूँ. Try and understand. I'll just show you इसका calculation. How are you going to calculate the NRDD part? Let me take you to balance sheet. तभी आपको समझ में आएगा. Look at the calculation here in datas. Datas कितना है? 1,65,000. उसमें से न्यू RDD कितना बोला था? I will show you here in the question. It was there. Take you to the question. Provision ये रहा. Provision for bad debts is how much? 10% on debtors. ठीक है, तो आपका debtors कितना है? मैं आपको इस बैलेंस शीट का डायरेक्ट कैलकुलेशन दिखा रही हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड द फिगर्स. ठीक है, सो ये मुझे कैसे मिला? 10% बोला है ना डेटर्स का, तो 1,65,000 का डेटर्स का 10% निकालो, कितना होता है? 16,500. ठीक है, तो ये मेरा न्यू RDD है. ठीक है, तो 1,65,000 में से 16,500 हटा दो, 1,48,000. अभी ये जो फिगर आया ना, इस पे आपका रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट होगा. ओके, इसका 5% इज RFDD, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. कितना? 7,425. ओके, 1,48,500 का 5%, it is 7,425. Just a minute. 7,425. Okay, then take it in the outer column, minus 1,48,500. Okay, so 1,41,075. Okay, so ये भी एडजस्टमेंट है, इसका भी दो इफेक्ट्स दिखेगा. बराबर, करेक्ट? So I'll just take you back to PNL, और वो दो इफेक्ट्स आपको दिख जाएंगे. ये देखो, 16,500 का वन इफेक्ट, ओके, और ये RFDD का फर्स्ट इफेक्ट इधर, और सेकेंड इफेक्ट अभी मैंने दिखाया दोनों का डेटर्स. ठीक है, so 6,500 plus 16,500 minus old RDD 14,600, so this is 8,400. ओके, फिर बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, फर्स्ट इफेक्ट, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन. ओके, फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इसका भी मैं आपको इफेक्ट दिखाती हूँ बैलेंस शीट में. ये देखो, क्रेडिटर्स पे आएगा ना, अनरिकॉर्डेड परचेजेस का सेकेंड इफेक्ट, राइट? 1,05,000, add unrecorded purchases 5,000, 1,10,000, इसका 5% आपको निकालना है. ओके, ये आंसर कितना आया? ये आंसर आया 1,10,000. ओके, इसका 5% निकालो, दैट इज RFTC. ओके, 5,500. Make sense, right? This is what I wanted to tell you. Creditors, add unrecorded purchases. What is the net answer? 1,10,000. उसका 5% is reserved for discount on creditors. Okay. So then I will take you to this. PNL. दोनों इफेक्ट दिख गए, PNL क्रेडिट एंड डेटर्स, सॉरी क्रेडिटर्स में से भी लेस हो गए. So 5,500 plus 4,38,000 minus 38,000 minus
96,000 minus 15,000 minus 8,400 minus 8,800 minus 45,000 minus 8,400 minus 7,425. So 2,16,475 ये मेरा नेट प्रॉफिट है जो पीएनएल अप्रोप्रिएशंस में रिफ्लेक्ट होगा. ओके, then come to P&L appropriations. ये रहा interest on capital. Okay, this is salary, first effect. Interest on partners loan, first effect. ये सब adjustments में है. ठीक है, let's see कितना था. Interest on capital कितना है? 5%. So 1,20,000 और 80 है मेरा इंटरेस्ट. सॉरी, मेरा ओपनिंग कैपिटल. So 1,20,000 का 5% 6,000 and 80,000 का 5% 4,000. Okay, so I'm just writing it here. 1,20,000 का 5% और ये 80,000 का 5%. ठीक है, सैलरी तो दिया हुआ है, 15,000 ईच बोला है. पार्टनर का लोन कितना है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दैट इज ऑल्सो 5%. ठीक है, कितना है लोन? 90,000 और 70,000. सो 90,000 और 70,000 का 5%. ओके, 90,000 का 5% and 70,000 का 5%. So this is 4,500. This is 3,500. Okay, and close it. 2,16,475 minus 10,000 minus 30,000 minus 8,000. 1,68,475 और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा मेरे कैपिटल रेशियो में जो था 3:2. ओके, सो into 3 divided by 5. So 1,01,085 1,68,475 into 2 divided by 5. 67,390. Okay, so this is how we are going to calculate. Fine. So again repeat, appropriations में interest on capital, salary given to a partner, and interest on partner's loan, interest on drawings, all these type of adjustments are reflected. Okay, so I hope this is very clear to everyone, right? And since partners capital and current account both are there in the question, so this net profit of mine will be reflected in current account. Okay, so here we make a current account. This is the opening balance of current account. Will have only one effect. Then interest on capital का second effect, salaries का second effect. ठीक है, drawings का one effect because वो trial balance में था. Okay, और ये जो अभी हमने नेट ये निकाला ना नेट प्रॉफिट, ये इसका सेकेंड इफेक्ट भी करंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, ये रहा. ओके, सो 18,000 प्लस 6,000 प्लस 15,000 प्लस 1,01,085. 18 plus 6 is 24.
24,000 plus 15,000 plus 1,01,085 minus the debit side is 10,000. Okay, so this is my answer, 1,30,085. ये वाला. Next, 12,000 plus 4,000 plus 15,000 plus 67,390 minus 10,000. 88,390. ओके, सो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है जो ट्रायल बैलेंस में, सॉरी, जो बैलेंस शीट में दिखेगा. ठीक है, ये रही मेरी बैलेंस शीट. शो यू वन बाय वन. ठीक है, सी द एसेट साइड. बिल्डिंग, it was having an adjustment, depreciation second effect. Plant and machinery was having an adjustment of depreciation second effect. Furniture was having an adjustment second effect. Okay, closing stock second effect. बाकी जो भी ट्रायल बैलेंस फिगर्स है सबका एक एक इफेक्ट. ठीक है, सो बिल्डिंग 1,76,000 लेस 8,800, 1,67,200, 4,50,000 minus 45,000, 4,05,000, 42,000 minus depreciation 8,400, 33,600. Okay, then let's see your datas. Datas का calculation तो मैंने अभी आपको बताया था with respect to RFDD also. Okay, bills receivable one effect, bank one effect, cash one effect. Okay, then you can see the capital. कैपिटल का हम अकाउंट ही नहीं बना रहे क्योंकि उसमें कोई सेकेंड इफेक्ट्स जा ही नहीं रहा है. ओके, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है ना, तो ये देखो सेम ही है, 1,20,000 and 80, दैट मेक्स इट टू 2 लाख. करंट अकाउंट का भी जो हमको आंसर मिला था ये. ओके, इसका सेकेंड इफेक्ट किधर दिखेगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी. तो सी योर बैलेंस शीट लायबिलिटी. ओके, पार्टनर्स लोन 90 और उसका वो सेकेंड इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. Same way, partners loan, Piyusha, second effect. Bank loan, outstanding wages, second effect. Creditors, ये भी मैंने कैलकुलेशन आपको दिखाया था कैसे आएगा. Bills payable. Okay, so when you total this, this is how it will look, a balance sheet. The tally amount is 8,61,975. Okay, so I hope this part is clear to everyone. Okay, so let's meet in the next lecture then with another variety of sum on partnership final accounts. Till then, have a happy learning.